The birth of an icon. From Radhe to Jagadamba. Radhe, 1936, Hyderabad, Sindh. Radhe was a beautiful, elegant girl with glowing eyes, soothing smile, and a razor-sharp intelligence. She studied in Kundan Mall Model School in Hyderabad, Sindh. Dadi Prakashmani, who was the chief of the Brahma Kumaris, was her classmate. What a contrast! Radhe followed all the latest fashions, while the other was a simple, plain, modest girl. Pokhar Das, Radhe's father, was a big merchant of gold and silver. In 1933, he suffered a huge loss in business and had a massive heart attack and passed away. Therefore, Radhe and her family had to shift to her maternal house in Hyderabad when she was barely 14. Radhe's maternal house was in the same locality in which Dada Lekraj and his wife Jashodamata lived. Jashodamata invited Radhe's mom and her sister, who also lost her husband, to come to Gita Satsang by Dada Lekraj. 1936 Gita Satsang. Dada Lekraj every evening used to share the essence of the Gita in simple words. At the beginning and end of the satsang, Dada used to chant the word Om. There was a miraculous transformation in the life of Radhe's mom and aunt. On seeing them so changed, Radhe started to attend the satsang. The birth of Om Radhe. When Dada saw Radhe in the Gita Satsang, he knew there was something very special about her. Dada entrusted Radhe to lead the Om chant at the beginning and at the end of the satsang. Her chanting was so mesmerizing that the attendance at the Gita Satsang progressively increased. People started addressing her as Om Radhe. Dada too started calling her Om Radhe and sometimes Beti, daughter. 1936, the birth of Mama. A few months later, Dada had to go to Kashmir along with his family. In his absence, he entrusted the responsibility of running the Gita Satsang to Om Radhe. The satsang rapidly grew in popularity under Om Radhe's leadership. When Dada returned from Kashmir, he felt elated at the incredible success of the satsang. During his absence, there were many deep internal changes within Dada Lekraj. Dada advocated all men and women who belonged to the satsang to start leading a life of celibacy and purity. This did not sit well with the husbands, fathers, and uncles of the women and girls who were attending the satsang. Many of them protested, picketed, and tried to force Dada to change his ways. Dada deputized Om Radhe to calm the husband's frayed tempers. With her tact, intelligence, and disarming personality, she succeeded in soothing their fears. Dada's daughter, Dadi Nirmal Shanta, came to stay with him with the aim of following the spiritual path. Dada told his daughter to consider Om Radhe as her mom and put her under Radhe's care. Dadi Nirmal Shanta used to call Om Radhe as Mama because she was looking after her as a mother does. In a few months' time, everyone started addressing her as Mama, even Dada, because of her beautiful, nurturing qualities. From 1936 to 1950, the satsang became Om Mandali, Dada Lekraj became Brahma Baba. Dada Lekraj created a trust of 8 young women and surrendered his considerable wealth to the trust. Mama was the head of that trust. Brahma Baba and 400 others from the original satsang
went into seclusion in Karachi, which is now Pakistan, and Mama continued to take care of the woman and continued her spiritual effort. 1950, the birth of Saraswati. In 1950, Om Mandali moved to India and in due course changed its name to Brahma Kumaris. Mama cultivated spiritual knowledge and propagated it so lucidly that it captivated the listeners. Sweet Mama used to take everybody into the depth of knowledge by revealing innumerable secrets from beloved Baba's versions. She could shower the rain of knowledge even on one point for an hour. She absorbed the knowledge in herself as she spoke and truly walked her talk. Her talks would leave an imperishable impact on the minds of the listeners. Thus, the mission of Brahma Kumaris grew in acceptance, recognition, strength, success, and popularity because of Mama. The birth of Jagadamba. Because of her pure love for everyone she met, and because of her knowledge, she came to be known as Jagadamba, World Mother. The sanskaras of an unlimited mother were very visible in Mama. All those who came in front of Mama would immediately get spiritually elevated. Mama was at first Radhe, then she became Saraswati, and thereafter became Jagadamba. All these three forms were experienced from Mama in the practical form. There was so much power in her speech that those who heard her would be liberated from body consciousness and begin to experience God's love by being stabilized in soul consciousness. Here are a few of our beloved seniors sharing on Mama's exceptional qualities. राधे नाम देते थे, तो राधे जब गई और बाबा को देखा तो उसने ये अनुभव किया कि सचमुच ये तो मेरा अलौकिक पिता है। तो उसी समय से ही लेकर के मम्मा भी उसी सत्संग में दाखिल हुई। जब उसने बाबा का ज्ञान सुना और सभी जो वहाँ भी माताएं कन्याएं आती थी उनको साक्षात्कार हुआ कि ये तो लक्ष्मी स्वरूप है, क्योंकि बचपन से ही उसके गुण बहुत अच्छे थे। तो जब साक्षात्कार हुआ और सभी उसको मामा कहने लगे, तो इसी से भी उसको भी निश्चय हुआ कि हम ही भविष्य में ऐसे बनने वाले हैं। तो ऐसा था जो मम्मा की प्रकृति गंभीर बहुत थी, शांत गंभीर, भले मूली चलाएंगी, सारी ड्यूटी डिपार्टमेंट मम्मा के ऊपर थी, जवाबदारी थी। लेकिन हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, समझो कोई बात नहीं, जैसे बेगर लाइफ आई तो एक होता है ना भाई खाने के लिए नहीं है तो चिंता थोड़ी हो, लेकिन मम्मा का स्वभाव ऐसा रहा, हमेशा मुस्कुराती रहेंगी, कुछ भी हो जाएगा। कोई का शरीर छूटता है, खबर आई बाहर से आई इधर से आई, मम्मा ने शरीर छोड़ा, कभी भी ऐसी रहेंगी जैसे मम्मा का कोई कनेक्शन ही नहीं है, मुस्कुराती रहेंगी और गंभीरता बहुत थी। कुछ भी मम्मा को सुना दियो तो ऐसे हमको कभी फिक्र नहीं रहेगा, तो पता नहीं मम्मा कुछ बाबा को रिपोर्ट करे या मम्मा किसको सुना ले या मम्मा नाराज हो जाए। नाराजगी क्या होती है हमने कभी मम्मा से अनुभव नहीं किया। मम्मा शिक्षा देती थी कि तुम लोग आ सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता है, परंतु तुम्हें प्रेम और ज्ञान से व्यवहार करो, जिद नहीं दिखाना है, हठ नहीं करना है, तो माँ बाप और भी तुम्हारे लिए समझे कि ज्ञान में जाके क्या सीखी है। उनको लगे कि वो जहां जा रही है वहां बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा इनको मिलती है। उनकी सेवा करो, उनसे मीठा बोलो, वो कुछ गाली दे तो सहन करो, सामना नहीं करो। इस तरह से मम्मा हमको मीठी मीठी शिक्षाएं देती थी, तो हम बांधेलियों के दिल को भी मम्मा ने जीत लिया। ऐसी शिक्षा देती थी जो उस शिक्षा को हम यूज करते थे घरों में तो हम सक्सेसफुल हो जाते थे। तो मम्मा के लिए कि जिगरी प्यार होने लगा, तो दिनचर्या को चलाने में प्रैक्टिकल मम्मा का वो था, सहयोग था। कहती नहीं थी
पर ऐसा एक्यूरेट चलती थी जो मम्मा के पीछे पीछे चल पड़ते थे, और कोई बात भी देंगी तो बड़े धीरज से देंगी, और हमारा अवगुण चित्त पर कभी नहीं रखेंगी। कल बात हो गई मम्मा के साथ, मम्मा मेरी कोई कमजोरी देखी, पर हमको विश्वास है मम्मा हमको अपने चित्त पर ऐसे नहीं रखेंगी। वही मम्मा प्यार देती रहेंगी और प्यार से हमको जब आगे। मम्मा पुणे में लास्ट में हमारे पास थी, 5 सप्ताह साथ में थे, देखा मम्मा इतनी सेवा करते हुए भी कब वर्णन नहीं करती थी मैंने ये किया। असल में तो कई बार ये बात अंदर में याद आती मम्मा की, मम्मा चिंतन वर्णन से सदा फ्री देखी। और साथ साथ मम्मा में खास ये देखा कितना अंतर, मम्मा हम अंतर्मुक्ता कहेंगे, लेकिन मम्मा का बाहर निमित्त आना, बाकी अंदर अपने मस्ती में रहना, चेहरे पर वो खुमारी, वो नशा, वो खुशी इतनी भरी हुई थी जो कभी भी थोड़ा गंभीरता इतना अच्छी मीठी थी, जो मम्मा ऑर्डिनरी कुमारों के तरह से या माताओं के तरफ से, मनुष्य के तरफ से ऐसे हंसना या ऐसे बोलना वो नहीं देखा। उसके मुस्कुराने में भी बहुत बड़ा राज समाया होता था। इशारे से समझना हो तो मम्मा के मुस्कुराने से समझ जाएंगे। शिक्षा भी मम्मा देंगी बहुत इशारे से, रॉयल्टी से। मुझे ये बहुत मम्मा की बात दिल को लगी हुई है। जब भी मामा कहाँ हमारे पुणे में जाती थी, मामा को लेके जाते थे थोड़ा सैर कराने, तो मुझे कहती थी मैं जा रही हूँ। मुझे कहती मम्मा मेरे से पूछती क्यों है? तो ये मुझे बहुत मम्मा की बात अच्छी लगी है। मैं कहाँ भी जाएंगी, कहाँ से आएंगी, बताएंगी मैं आई हूँ, मैं जा रही हूँ। ये सभ्यता मम्मा ने बहुत अच्छी सिखाई है। और सदा हर एक से मम्मा रिगार्ड से बात करती थी। मुझे मम्मा आप कहती थी, मुझे लज्जा आती थी। मम्मा को कहती थी मम्मा मुझे आप नहीं कहो। तो मम्मा के पास जब भी हम जाते थे तो ऐसे लगता था जैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने वाली माँ है, और प्यार भी मम्मा का ऐसा पाते थे जैसे छोटे बच्चे माँ के पास जाते हैं, लेकिन ये निस्वार्थ प्यार था, अलौकिक प्यार था। पवित्रता उसमें रच गई थी एक प्रकार से, दृष्टि में, वृत्ति में, स्नेह में, उसका मुस्कुराना बिल्कुल दुनिया से अलग किस्म से था। जब 1964 में वहाँ बॉम्बे में थी, उन दिनों में रमेश भाई के साथ हम कार में वाटरलू मेंशन सेंटर से रमेश भाई के घर जा रहे थे, क्योंकि उन दिनों मातेश्वरी वहाँ उनके घर पे रुकी हुई थी। तो क्लास के बाद जब रात को जा रहे थे तो एक एडवर्टीजमेंट देखी, रोजर ड्रिंक, जिसमें कि वो बॉटल भरती, फिर उससे ग्लास भरता, फिर खाली होता। ये नियॉन साइन में चौपाटी पर बॉम्बे में थी, बहुत बड़ा साइन था। उसको देख के हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा ही हम एक प्रदर्शनी में एक कोई डिज़ाइन ऐसा बनाएं जिससे ये स्पष्ट हो कि शिव बाबा से आत्मा में वो शक्ति आती है, फिर जब कम हो जाती है फिर आत्मा में बढ़ती है। तो वो बात हम डिस्कस करते करते मम्मा से जब पूछा कि मम्मा आपको ये कैसा डिज़ाइन लगा, तो मम्मा ने तो ऐसी बात की कि हमारे तो पाँव के नीचे से धरती ही गायब। मम्मा कहती हैं ये सृष्टि की चीज़ें मम्मा के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, कलयुगी सृष्टि की। June 24th, 1965. At the young age of 46, Mama left her body after a courageous battle with cancer. Om Shanti.